ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय। ओम श्रीमद् भागवत श्री भगवान जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय 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 जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का संतों का परम धन, जिनके मूल श्लोक गायन के क्रम में आगे अवगाहन करने से पूर्व अपने मन चित्त प्राण और रसना को पवित्र करने के लिए चंद पल का भगवत नाम का स्मरण। तो आइए हम सब मिलकर के गाएं और भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राधा 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 राधा। जय श्री राधा रमण बिहारी। जय श्री राधा रमण बिहारी। जय श्री राधा रमण बिहारी। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान जी की जय। चतुर्थ स्कंध अथे कोन 300 अध्याय है। पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। प्राचीन बर्हिरुवाच भगवंस्ते वचोऽस्माभिर्नासाम समागमगम्यते कवयस्तदुजानन्ते न वयं कर्म मोहिताः। नारदुवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्याद्यव्यसनक्त्यात्मनः पुरम् एकदुचित्र चतुष्पादं बहुपादं पादकं यो अभिज्ञात हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिर्नाम विर्वा क्रियागुणैः यदा जिगृक्षण पुरुषः कातरसेन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्ग्रे तत्र मनुत साद्विति बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान् ममाहमिति यत् कृतं यामधिष्ठाय देहे अस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते अक्षभिर्गुणान् सखाय इन्द्रियगणाज्ञानं कर्म च यत् कृतं सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः। श्री राधा रमण बिहारी। श्री राधा रमण बिहारी। बृहद्बलं मनो विद्यादुभयेन्द्रियनायकं पाञ्चालाः पञ्चविषयायन्यमध्ये नवखं पुरम् आक्षणी नासिके कर्णो मुखं शिश्नगुदाविति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति यस्तदिन्द्रियसंयुता अक्षणी नासिके अस्य मिति पञ्चपुरः कृताः दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृता पश्चिमे इत्यदो द्वारो गुदं शिश्नमिहोच्यते खद्योता आविर्मुखी चात्र नेत्रे कत्र निर्मिते रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यास्यं विपन्नो वाग्र सविद्रसा आपनो व्यवहारो अत्र चित्र मंदो बहुदनं
पेत्रे हुरदक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहु स्मृता प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पाञ्चालसंगीतं पितृयानं देवयानं श्रोत्रा श्रुतधरादव्रजेता आसुरीमेढ मरवाग्यादा वाग्यादवारभ्य वायो ग्रामीणां रते उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निर्नतिर्गुद उच्यते वैशसंनर्कं पायुर्लुब्धो लुब्धको अन्धो तो मे शृणु हस्तपादोपमां हस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च अंतःपुरं च हृदयं विशोचेर्मन उच्यते तत्र मोह प्रसादं बाहरसं प्राप्नोति तद्गुणः यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा ततोपद्रष्टा आत्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते देहो रतस्त्विन्द्रियास्वसंवत्सरयो आगते द्विकर्म चक्र स्त्री गुणध्वज पंचासु बंधुरा मनोरश्मिर्बुद्धिसुतो है नीडो द्वन्द्वकुबरः पंचेन्द्रियार्थ प्रक्षेपः सप्तधातुवरोधकः आकुतिर्विक्रमो बाह्योत्मृग तृष्णा प्रधावति एकादशेन्द्रिय च मोह पंचसुना विनोदकृतः संवत्सर चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्याहानिः गन्धर्वा गन्धर्भ्यो रात्र्यः स्मृताः हरन्त्यायो परिक्रान्त्या कष्टयुत्तर सतत्र्यं कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्तां नाभिनन्दति स्वसारं जगृहे मृत्युक्षया यवनेश्वरः आदयो व्याधयस्तस्य सैनिकाः यवनाश्चराः भूतोपसर्गासुररयः प्रज्वारो द्विविधोज्वरः एवं बहुविधैर्दुःखैर्देवभूतात्म संभवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोभृतः प्राणेन्द्रिय मनोधर्मानात्मन्यद्यस्य निर्गुणः सेते कामलवान् ध्यायन्नमः मम मामिति कर्म कृत यदा आत्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विसज्येत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते अवसः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते शुक्लाद प्रकाश भूयिष्ठां लोकानाप्नोति कर्चित् दुःखोदर्कान् क्रियाया सांगस्तमः शोकोत कटान् क्वचित् पुमान क्वचित् स्त्री क्वचिन्नो भयमन्दधि देवो मनुष्यस्तीर्यगवा यथा कर्म गुणं भवा श्रीराधारमण विहारे चुदपरितो यथा दीनः सारमेयो गृहं चरण विन्दति यदिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा काम सयोजीवे उच्चावच पथा भ्रमण उपयधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियं दुःखे सवे कतरेनापि देवभूतात्म हेतुषु जीवस्य च व्यवच्छेदः स्याच्चेत् तत प्रतिक्रिया
यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरु मद मुद्वहन् तं स्कन्धेन सा आधत्ते तथा सर्वाः प्रकृति प्रतिक्रियाः नैकानन्तः प्रतिकारः कर्म न कर्म केवलं द्वयं विद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्नैवानघा अर्थे है विद्यमाने अपि संसृतिरे निवर्तते मनसा लिंगरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अथात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संसृतिस्तदभ्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो वासुदेवे भगवती भक्ति योगः समाहिता सादृचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति सो अचिरादेव राजर्षे स्यादच्युत कथाश्रयः श्रन्नवतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयतः यत्र भगवता राजन् साधवो विशदाशयाः भगवद्गुणकथा भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्रचेतसा तस्मिन् मन मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्ये वितृषो नृभ गाढकर्णे स्तान्नना स्पृशन्त्यनददृढ भयशोकमोहाः एते रूपद्रुतो नित्यं जीवलोक स्वभावजेह न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधो रतिम् श्री राधारमण विहारी प्रजापति पति साक्षात् भगवान गिरीशो मनु दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादया मरीचिर्यत्र अंगिरसो पुलस्तयः पुलः कृतो भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम् शब्द ब्रह्मान् दुष्पारे चरन्त उर्विस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं चिन्ननं भजन्तो न विदुः परम् यदा यमनुग्रहाग्रहणाति भवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठताम् तस्मात् कर्मसु बर्हि स्मन्नन ज्ञानादर्थकाशिषु मार्थदृष्टिकृताः स्रोतस्परसरसिस्वस्पृष्ट वस्तुषु एवं स्वं लोकेन विदुस्ते वे तत्र देवो जनार्दनः आहुर्यधुर्मधियो वेदं सकर्म मतद्विदः आस्तिर दर्वे प्राग्रेहकार्तस्ने चिन्मण्डलम् अस्तब्धो बृहदवधान्नमानि कर्म नावेसि यत्परं तदकर्म हरितो संयत्सा विद्या तन्मतिर्यया हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वर तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणाम्यः सावे प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद सावे वे विद्वानो यो विद्वान् स गुरुर्हरि नारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषरसवा अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितं शूद्रश्चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं षडङ्ग्रिगण सामसु लुब्धकर्मण कर्णम् अग्रे बृकान् सुत्रिपो अभिज्ञया विगणय्य यान्तं
पृष्ठे मृगं मृगया लुब्धकवान् भिन्ननम्। जय श्री राधारमण विहारी, जय श्री राधारमण विहारी। अस्यार्थः सुमनः सधर्माणां स्त्रीणां शरणं आश्रमे पुष्पमधुगन्धवत क्षुद्रतमं काम्यककर्म विपाकजं कामसुखलवं जह्योपस्थास्त्यादि विचिन्नवन्तं मिथुनीभूय तद्विनिवेशित मनसं षडङ्गेऽग्रगण सामगीतवदति मनोहर मनोहर वनिता दीजनालापेष्वतितरामते प्रलोभित कर्णमग्रे भृगयूथवदात्मान आयुर्हरतो अहोरात्रान्ताना काललव विशेषान विगणन्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनो प्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तो अन्तःसरेण यमिह परा विद्यति तमीमम् आत्मानमहो राजन् भिन्नहृदयं द्रष्टुमर्हसीति। सा त्वं विचक्ष्य मृगचेष्टित आत्मनो अन्तमश्चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनिं च चित्ते जह्यङ्गनाश्रमम् सतमायूतगातं प्रीणीहि हंसशरणं विरम्य क्रमेण। राजोवाच श्रुतमनवीक्षितं ब्रह्मण भगवान् यद्भासत नैतजजानन्त्योपाध्यायाः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि संशयो अत्र तु मे विप्र संचिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि मुह्यन्ते यत्र नेन्द्रियवृत्तयः कर्माण्ययारभते येन पुमानी विहाय तमा अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि सा यद् श्रुते यदि वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत् क्रियते प्रोक्तं परोक्षं च न प्रकाशते। नारदोवाच येनेवारभते कर्म तेनेवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते हव्यवादेनेवादनेन लिङ्गेन मनसा स्वयं शयानमीमुत्सृज्य स्वन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा ममेत मनसा यद्यसावहमिति ब्रुवन् गृहणीया तद पुमानराददं कर्म येन पुनर्भवा यथानुमीयते चित्तमुभैरिन्द्रिये हितेह एवं प्रागदेहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः नानुभूतं क्वचानेन देहेनादृष्टमश्रुतं कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि तेनास्य तादृशं राजं ललिङ्गो देहसम्भवं श्रद्धत स्वानानुभूतो अर्थो न मनः अस्प्रष्टुमर्हति मनेव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन्न मनसि दृश्यते तथा यथा तथा नो मन्तव्यं देशकालक्रियाश्रियं
सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः आयान्ति वर्गसो यान्ति सर्वे मनसो समनसो जनाः सत्त्वैके कनिष्ठे मनसि भगवत पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि द्वेमसि वेदपुरमसि वेदमुपर ज्यावभासते नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावद् बुद्धिमनो अक्षार्थ गुणव्यूहो नादिमाना सोप्तिमूर्छोपतापेषु प्राणायन विघातता नेहते अहमिति ज्ञानं मृत्यु प्रज्वालयोरपि श्री राधारमण विहारी श्री राधारमण विहारी गर्भे बाल्ये अप्यपौषकल्यादेकादशविधं तदा लिंगं न दृश्यते लिंगं न दृश्यते यूनः कुहुवांचन्द्रमसो यथा अरते है विद्यामाने अपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयान्यस्य स्वप्ने अर्थागमो यथा एवं पंचविधं लिंगं त्रिवृत्त षोडश विस्तरं विस्तृतम् एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुञ्चति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति यथा तृण जलुके यन्नापयाति च नात्यजेन्म्रियमानोऽपि प्रागदेहाभिमतिं जनाः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम् मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनं यदाक्षेश्चरितान् ध्यायन कर्मण्याचि नूते असकृता सति कर्मण्य विद्यायां बन्ध कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादारतं भज सर्वात्मना हरिं पश्यस्तदात्मकं विश्वं स्थित्योतपत्यप्ययता मैत्रेय उवाच भागवत मुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य हयमुमां मन्त्र्य सिद्धिलोकं ततो आगमत प्राचीनबर्हि राजर्षि प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रा नगमात तपसे कपिलाश्रमं तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गो अनुभजन भक्त्या तत्साम्यतामगात एतदात्मपरोक्षं गीतं देवर्षि नगा यः श्रावेद्य शृणोयातस्लिङ्गेन विमुच्यते एतन्मुकुन्द यशया भुवनं पुमानं देवर्षिरवरेयमुखाने श्रितमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्टयं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्तबन्धा आध्यात्मपारोक्षमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसश्चिन्नो ननश्चिन्नो अमुत्र च संशया इति श्रीमद्भागवते
महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन वरिः नारद संवादो नामेकोनत्रिंशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा 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 राधा, बोलो राधा 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 राधा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान जी की जय। बोलो राधा 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 रा। जय श्री राम।